Hello everyone, welcome to our crash course lectures. Today we will discuss a very interesting topic and the name of the topic is social movements. This is a very general topic, लेकिन किसी general topic को sociological perspective से कैसे पढ़ते हैं, कैसे thinker का use करते हैं, we will discuss in this class. Okay? So this is a social movement and falls in unit 7. Okay? Unit 7 of our syllabus. Social movement. So before going to discuss any topic, it is very important to know what should be the structural format for that topic. Means what should be the intro, body and conclusion. Means उसमें पढ़ना क्या है और कैसे avoid करना है. So मैंने हमेशा बोला है कि if you follow a structural format for any topic, then definitely कैसा भी question आएगा, you will attempt that question and you will get a very good marks. So this is social movement. Before going to start what should be the intro, let us see what should be the structural format. Means हमें इसमें पढ़ना क्या करना है, पढ़ना क्या है. This one is structural format means what should be our introduction. The second, what should be the characteristics, features of social movement. The third is what are the various theories related to social movement. The fourth is what are the various types of social movement. And the fifth one is what are the stages of social movement. अगर इस तरीके से social movement हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसे कर लोगे. जनरली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन पेपर 2 एंड इन 10 मार्कर. पेपर 1 में भी आता है बट जनरली इट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 10 मार्कर. सो दिस इज आवर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट. अब बोलोगे सर व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन. तो मैंने अर्लियर लेक्चर्स में भी एक ही चीज बताया आप लोगों से. टू इंट्रोड्यूस एनी टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक. डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन और एक अच्छा डेफिनेशन लिखते हो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. सो दिस इज सोशल मूवमेंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मूवमेंट. इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मूवमेंट. सो सोशल मूवमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सम आइडियोलॉजी which want to bring some changes in the society called social movement. एक organized group of people हो जो किसी ideology के basis पे बना हो और they want to bring some social changes in the society lead to social movement. So this should be your introduction. Now we are going to see what should be the characteristics features of social movement. तो definition में ही आपको characteristics features बता दिया गया है कि what should be the characteristics features of social movement. तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे बॉक्स तरीके से और एक डायग्राम के तरीके से बनाओगे तो definitely you will get very good marks. Organized group of people with ideology. Third is organization and the last one is goal. So characteristics features of social movement. ऐसे बॉक्स बना के अगर ऐसे कुछ करते हो तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होता है. इन सिंगल को वो समझ आता है कि आपको सब पता है तो आपके नंबर इंक्रीज कर जाते हैं. सो दिस इज characteristics features of social movement. It is an organized group of individual. वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, एक तरीके से ग्रुपिंग हुई है. जैसे अभी फार्मर मूवमेंट्स का एग्जांपल देख लो. दे आर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. वो एक आइडियोलॉजी के हैं. उनका ना ही कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी था, ना ही सोशलिस्ट, ना ही रेडिकल, ना ही रिलीजन, कुछ नहीं. आइडियोलॉजी थी सिंपल फार्मर्स, फार्मर एंड देयर राइट्स. उनकी आइडियोलॉजी थी फार्मर्स एंड फार्मिंग. ओके. द थर्ड इज गोल.
गोल उनका ये था कि दे जस्ट वांट कि आप एबॉलिश कर दो जो 3 कृषि कानून थे, 3 फार्मर बिल्स, आप उसे हटा दो। द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज किए। हमारा जो फार्मर मूवमेंट था इस बार जो चला हिंदुस्तान में, वो उसके सक्सेस होने का कारण ये है, वो इतना ऑर्गेनाइज था, लोगों ने एकदम लो लेवल पे काम किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाया है, देन इट लीड्स टू सक्सेस। So these are the characteristics features of social movement. Means it's an organized group of individual and then it is based on certain ideology with a particular group, and the last one is organization. Okay? अब बोलोगे सर इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, सेमी ऑर्गेनाइज्ड या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिख दो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। देखते हैं, इंट्रो इज ओवर, characteristics features are over, now what are the theories which is related to social movement। कौन कौन से ऐसे theories हैं जो social movement का कारण बनते हैं, ठीक? वो theories से आप लिखो या जनरल लिख सकते हैं causes of social movement। ओके, causes of social movements, ठीक ना? या तो थ्योरी से आप उसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो या ऐसे जनरल कॉजेज भी लिख सकते हो, लेकिन अगर थ्योरी से डिस्क्रिप्शन देंगे हम तो काफी नंबर अच्छे मिलेंगे हमें, ठीक? नाउ व्हाट आर द थ्योरीज व्हिच आर रिलेटेड टू सोशल मूवमेंट? द फर्स्ट थ्योरी, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, ये नाम से ही पता चलता है कि इफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल who are residing in a particular society, if they feel deprived against someone, then social movement can take place। For example, USA में क्या होता था, all the rights were in the hands of whites, और जो blacks थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कई सारे बेसिस हो सकते थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। तो लास्ट में वो अपने आप को ऑर्गेनाइज किए कुछ आइडियोलॉजी पे, और एट लास्ट सोशल मूवमेंट टेक्स प्लेस। मींस आप इसे कह सकते हैं अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। जो 10th क्लास में आप पढ़ते होंगे, ऐसे लेके वो ब्लैक अफ्रीकन्स ऐसे लेके हाथों को मतलब ऐसे सिंबल दिखा रहे हैं अगेंस्ट रेसिज्म। सो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम अनटचेबल और दलित कम्युनिटी और गवर्नमेंट सबके लिए सब कर रही है और कुछ पता चले कि आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, ठीक? इफ यू फील कि government is doing everything for everyone but a particular section of society is cut off, अभी जो चल रहा है, Muslims are feeling that they are largely cut off from the mainstreams of the Indian society। with the passage of time they can be converted into social movements, ठीक? relative deprivation theory, वो रिलेट कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है और दूसरी कम्युनिटी को पीछे रखा जा रहा है, उनकी पॉलिसीज वगैरह ऐसे आ रहे हैं, इसकी वजह से सोशल मूवमेंट हो सकता है। सो दिस इज relative deprivation theory। Now the second most important theory, which is very important, this is called strain theory। second, strain theory। strain theory से क्या समझ रहे हैं आप? तनाव, मतलब कुछ तनाव। तो this theory is given by Spencer। this theory is given by Spencer, and notice one thing, relative deprivation theory is given by E. Stoffer। relative deprivation theory is given by E. Stoffer। relative deprivation theory is given by E. Stoffer। E. Stoffer। One, a section of people feel deprived, then the other section, then social movement can takes place। relative deprivation theory। Now strain theory, this theory is given by N. J. Spencer। strain theory means तनाव। तो इसमें क्या होता है, when a new social system, a new value system come into the conflict with old value system, then it creates strain in the society and at last it leads to social movement। new value system comes
into conflict with old value system. जब न्यू वैल्यू सिस्टम ओल्ड वैल्यू सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट क्रिएट्स स्ट्रेन इन द सोसाइटी, टेंशन इन द सोसाइटी, एंड एट लास्ट इट लीड्स टू सोशल मूवमेंट्स. सो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म आपने पढ़ा होगा, तो इसमें स्ट्रेंथ थ्योरी में ये होता है कि मान लो अभी मैरिजेस को ले लो, तो मैरिजेस हिंदुस्तान में कैसे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, एक मेल एक फीमेल. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन द अर्बन एरियाज, अर्बन कल्चर, आजकल देयर इज अ प्रमोशन ऑफ गे मैरिज एंड लेस्बियन मैरिजेस. लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं. तो उसमें क्या हो रहा है, तो ओल्ड वैल्यू सिस्टम है, वो न्यू वैल्यू सिस्टम आ रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. इसीलिए देखो एक सोशल मूवमेंट डेवलप हुआ था. फर्स्ट इज लेस्बियन मूवमेंट एंड गे मूवमेंट्स. क्यों? क्योंकि ओल्ड वैल्यू सिस्टम कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यू वैल्यू सिस्टम. जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्ट्रेंथ डेवलप होगा, सोशल मूवमेंट का डेवलपमेंट होगा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेंथ थ्योरी given by N.J. Smeltzer. Okay, now the third important theory which is given by Wallace, that is called revitalization theory. Revitalization theory, this is given by Wallace. Okay, Wallace ने इस थ्योरी को दिया. ये बोलते हैं कि he rejected the earlier theory, that is relative deprivation theory, and the second one is what? The first is relative deprivation theory and the second one is known as strength theory. He discarded both the theories. उन्होंने बोला कि that relative deprivation theory and strength theory are negative in nature. वो ये कहते हैं ये कि वो जो दोनों थ्योरीज हैं वो इस चीज में भरोसा करती हैं कि when there will be a conflict in the society तभी सोशल मूवमेंट होगा. जब भी वो नेगेटिव थ्योरी है. क्यों? Because if there will be a conflict in the society then there is development of social movement. ये कहते हैं नहीं, सोशल मूवमेंट उस समय भी हो सकता है if you want to bring some changes in the society. So social movement can be taken in a positive forms. If you want to bring some positive changes in the society, then people are organizing themselves in an organized format with a particular ideology and then it leads to social movement. समझ में आया? This is called positive approach, means revitalization theory mainly given by Wallace. He rejected the both theory. Okay, relative deprivation theory and strength theory. वो बोलते हैं कि वो नेगेटिव थ्योरी है. हमेशा सोशल मूवमेंट नेगेटिव कारणों के लिए नहीं, पॉजिटिव चीज को अगर आप स्ट्रक्चरल, आप इफ यू वांट टू ब्रिंग सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी, उसके लिए भी सोशल मूवमेंट होता है. जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ है. अन्ना हजारे मूवमेंट उनका देखा, लोकपाल लोकायुक्त इसके लिए हुआ था. तो ये भी एक मूवमेंट ही था टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी. किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण नहीं हुआ था. ओके, सो दिस इज revitalization theory. Now introduction is over, characteristics, features are over. Now what should be the theories which are related to social movements is over. Now fourth thing which we are going to discuss is known as types of social movement. Okay, the fourth is types of social movement given by Turner. Types of social movements. तो एक बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, तो there is no need to discuss all the types. बहुत तरीके के होते हैं, but Turner he gave 4 types of social movement. इन्होंने बोला था 4 तरीके के सोशल मूवमेंट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जो हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए. द फर्स्ट वन इज नोन एज रिफॉर्म मूवमेंट. द फर्स्ट इज रिफॉर्म मूवमेंट. नाम से ही पता चल रहा है, दे वांट टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स. दे जस्ट डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम. कोई भी वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है,
तो उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, उस सिस्टम में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट। फॉर एग्जांपल सती सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं सती सिस्टम गलत है, इंडियन सोसाइटी ठीक है, कल्चर भी ठीक है, हर एक चीज ठीक है, बट सती सिस्टम इज नॉट गुड। ओके, तो इसके लिए एंड इन दिस कैटेगरी वी कैन, फॉर एग्जांपल इन दिस कैटेगरी दैट इज ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसीलिए सोशियोलॉजी कनेक्शन विद हिस्ट्री, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, अर्लियर क्लास में बताया गया है। तो ये देखिए रिफॉर्म मूवमेंट, बेस्ट एग्जांपल ब्रह्म समाज एंड देन प्रार्थना समाज, बहुत सारे हो सकते हैं। नाउ द सेकंड व्हिच ही गेव, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशनरी, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, revolutionary movement, revolution, some form of violence is involved in such type of movement. Okay? This is called revolutionary movement, the movement in which some or a little amount or more amount जो भी कह लो, violence is involved to achieve some goals. Now the best example for revolutionary movement is Naxalbari movement in India. This is the best example which falls into the category of revolutionary movement. ये सब किसने बताया था? ये सब जो टाइप्स बताए थे ये टर्नर ने बताया था, ठीक? Now the third type which is very important is known as reactionary movement. Third type. Reactionary movement. अब reactionary movement क्या है ये देखिए. Some reactions, some basis of reaction, and in this category the best example is Arya Samaj and Deoband movement. हिस्ट्री में आप लोग स्पेक्ट्रम आप उठाएंगे, उसमें आप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रिएक्शनरी मूवमेंट, रिएक्शंस टू एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज और इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल आप अर्बन एरिया में आते हैं, ठीक, और वहाँ पे कल्चर है हमारे यहाँ कि ऑन ट्यूसडे आप नॉनवेज नहीं खा सकते, वो हमारा एक कल्चर है कि ट्यूसडे को नहीं खाते, वो रीजंस भी कई सारे देते हैं, बट आप माइग्रेट करके अर्बन सिटीज में आते हैं, एंड इन द अर्बन सिटीज देयर इज डिफ्यूजन ऑफ कल्चर्स। ओके, वेस्टर्न भी थॉट है, आप लिबरल भी हैं, सेकुलर आइडियाज हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, तो आपको क्या लगेगा मंगलवार को भी खा रहे हो नॉनवेज, यहाँ आपको एकदम सिंपल लगेगा। तो these type the movement which they want to preserve their own culture, they fall into the category of reactionary movement. Okay, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चालू किया, देवबंद मूवमेंट कहते हैं भाई वेस्टर्न आइडियाज इन्फ्लुएंस अपने पास रखो, हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी, रिएक्शन। ओके, इसके पहले था क्या रिवोल्यूशन, और उसके बाद पहले क्या था रिफॉर्म, द लास्ट इज एक्सप्रेसिव। Expressive movement. This is also very important. Expressive movement. They just want to express something. और जब सोसाइटी या जो अथॉरिटी नहीं समझती है तो वो सोसाइटी से ही अलग हो जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ मतलब ही नहीं है, अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करते हैं, बट एट लास्ट दे आर जस्ट कटिंग आउट ऑफ द सोसाइटी। द बेस्ट इज हैप्पी मूवमेंट in USA. So this is called expressive movement. So our intro, character, theories and then types are over. Now we are going to study our last topic in this is stages of social movement given by Herbert Blumer. Stages of social movements, Herbert Blumer. 5
he said that there are 5 stages for a social movement. Okay, social movement development 5 stages में होता है, and that stages are very important. The first one is known as agitation. The first stage is known as agitation. The second is development of we feeling. The third one is development of morale. The fourth one is development of group ideology. And the last one is development of organizational tactics. Okay? Operating tactics. This is stages of social movement. The first one is agitation. Means लोगों में agitation है, गुस्सा है, anger है. And when there is development of we feeling, agitation के बाद there is development of we feeling with a morale. Just example अभी जो farmer movement का success हुआ है, इसीलिए agitation पहले था, गुस्सा था, उन्होंने petitions किए कि भाई आप तीनों बिल वापस ले लो. नहीं हुआ, agitation हुआ, development of we feeling हुआ, फिर there is development of morale. उनका मोरल बूस्ट हो गया, कितनी भी एट्रोसिटीज हुई मोरल एकदम पीक पे था, नहीं घटना है तो नहीं घटना है. लास्ट इज ग्रुप आइडियोलॉजी. उनकी आइडियोलॉजी बन गई कि वी आर फार्मर, वी आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी और प्लेस. वी डेवलप अ ग्रुप आइडियोलॉजी, दैट इज फार्मर आइडियोलॉजी. एंड द लास्ट इज ऑपरेटिंग टैक्टिक्स, जो 15 अगस्त को हुआ. 4000 10,000 ट्रैक्टर लेके हम लाल किला पे पहुंच जाएंगे. सो दीज आर द 5 स्टेजेस which is given by Turner. Okay, which is given by Turner. These are the 5 stages given by Herbert Blumer. Stages of social movement given by Herbert Blumer. 5 stages: agitation, we feeling, morale, group ideology, and operating tactics. तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल मूवमेंट. तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. नाउ दिस इज सोशल मूवमेंट. इंट्रो, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, थ्योरीज, टाइप्स एंड स्टेजेस. नाउ what are the characteristic features of social movement? पहले हमने पढ़ा what do you mean by social movement. Organized group of people with a particular ideology want to bring some changes in the existing social order is known as social movement. There are 4 characteristic features. It's a group of individuals with a particular ideology and certain goals. Goals क्या है? And at last organization. These are the 4 characteristic features of social movement. Now the theories which are related to social movement. The first one is relative deprivation theory given by Stoffer. They said that a particular group of people in a society feel relatively deprived from other section of the society, and at last it leads to social movement. The second is strength theory given by N.J. Spencer. वो बोलते हैं कि when the old value system come in conflict with new value system, there is development of strength in the society, and at last it converted into social movement. ठीक? Now उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा revitalization theory mainly given by Wallace. He said that कि earlier 2 theories are negative in nature. हमेशा नेगेटिव चीजों के कारण सोशल मूवमेंट नहीं होता है. इफ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द सोसाइटी, उसके लिए भी सोशल मूवमेंट हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिवाइटलाइजेशन थ्योरी. And now we are going to discuss the types of social movement mainly given by Turner. He gave 4 types of social movement. The first one is reform movement, and the best example for reform movement is Brahmo Samaj, Pratna Samaj. They want to bring some reform in the existing social order. The second is known as revolutionary movement. They just want to destroy everything. Naxalbari movement. वो revolution करना चाहते हैं, and it rests on the principle of violation of laws in the society. The third is reactionary movement. Reactionary मतलब अपने आप को प्रिजर्व करना है, जो रिएक्शंस दे रहे हैं कि अदर कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ना पड़े. The best example आर्य समाज एंड देवबंद.
movement. The last is expressive movement. They want to express something, and when they are not able to express, they are largely cut off from the society. Okay, happy movement in USA. At last, we are going to study Herbert Blumer stages of social movement. He gave 5 stages of social movement. Social कोई भी movement होता है उसके 5 stages होते हैं. The first is agitation, development of anger, then feeling, development of weak feeling with a particular morale, and then there is development of group ideology. एक ideology development हो जाता है, and the last one is operational or operating tactics. So this is the concept, this is the thing which is related to social movement. और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो इसी के कैटेगरी में फंस जाएगा. ठीक, कैसा भी क्वेश्चन आएगा यू आर एबल टू राइट. आपने देखा कैसे स्टेजेस इसने क्या दिए, कैसे थिंकर का नाम यूज हुआ है. सो इन दिस मैनर we will cover each and every topic. So this is all about today's lecture. Tomorrow we will discuss a new and a very important topic. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you so much.